सुना है इसके बारे में पहले? Yes, sir. Yes, क्या sir. सुना है? Tell me. That they are used for, I guess, purchase returns and sales return. Sometimes, guys, it becomes so difficult to remember which is used for what. It becomes so difficult to draw that parallel. याद रखना भूल जाते हैं, बहुत सारा होता है. तो let's have a very simple way of understanding this. When I say credit note, a credit note is a document which says to the recipient मतलब कौन? Who is getting that credit note from me, that his account is credited in my books. मैं सेलर हूं, मैंने क्या एंट्री रिकॉर्ड किया? प्रथम to sales. This was my first entry, and when the sales return happened, I credited Pratham's account in my books. प्रथम का अकाउंट क्रेडिट हो गया, अब उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग करना है. सो वो बोलेगा हाँ मैं सेल रिटर्न जो भी है हो रहा है, लेकिन मैं रिकॉर्ड कैसे करूं? तुम्हारे प्रीमाइसेस में आके मैंने मटेरियल छोड़ दिया, आई नीड सम प्रूफ ना. सो I am issuing him a document, and that document is called a credit note. Why is it called a credit note? Because I, the issuer, is saying to the recipient कि भैया your account is credited in my books. पहले जो था डेबिट था, नहीं था, जो भी था, today with the help of this document I am crediting your account in my books of accounts. That's all this document tells me. समझा? Pretty simple. So let's modify. A credit note is a document which says to the recipient that his account is credited in the issuers. एक डॉक्यूमेंट इशू करने वाला होता है, एक वो होता है जिसको डॉक्यूमेंट मिलता है. जैसे सेल्स का इनवॉइस, सेलर इज द इशूअर, आई एम द रेसिपिएंट. सेलर बिल बनाता है, मैं रेसिपिएंट हूं, मुझे मिलता है. सिमिलरली now seller is making a document and saying this Pratham, your account is now credited in my books to 5,000 6,000 जो भी हमारा डिसीजन होगा वो. सिंपली इतना ही काम है इस क्रेडिट नोट का. सो from a seller's angle, credit note is used for recording sales return. One thing you have to remember always, and this is a mistake which even 6-7 year experience वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाते हैं. मैंने प्रथम को क्रेडिट नोट इशू किया, इसका मतलब प्रथम को डेबिट नोट मिला, ऐसा नहीं होता है. प्लीज गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड. मैंने क्रेडिट नोट इशू किया, प्रथम ने क्रेडिट नोट करके अकाउंट फॉर कर दिया. एंड ऑफ स्टोरी. नेवर एवर थिंक दैट मैंने क्रेडिट नोट इशू किया तो सामने वाले को डेबिट नोट मिला. नहीं. अ क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच सेज दैट ब्रो इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स योर अकाउंट इज क्रेडिटेड. सिमिलरली, what is a debit note? A debit note is a document which says to the recipient that his account is debited in the issuer's books. Now, अगर क्रेडिट नोट मैं इशू कर रहा हूं फॉर सेल्स रिटर्न, तो डेबिट नोट मैं कब इशू करूंगा? Purchase return. From a buyer's angle, a buyer will issue debit note to record a purchase return. Sometimes think of it this way. Okay, मैंने मोइस को कल वो आईफोन बेचा था ना. One iPhone, I sold that iPhone to him for 1 lakh rupees.
ठीक है. And later on there was a price revision. मुझे कुछ supplier से, I am the seller, मुझे किसी manufacturing company से कुछ benefit मिला, and I want to pass on that benefit to my customer Moise. So I call him up and say, भैया हमने आपसे 1 लाख रुपीस का बिल बनाया था for this particular mobile phone, बट गवर्नमेंट ने रेट्स चेंज किए हैं, whatever might be the situation, फोन का मार्केट प्राइस कम हो गया है, तो आई एम गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ दिस फोन बाय 5,000. ठीक है, I am going to reduce the price of this phone for 5,000. Is there a sale return or a purchase return happening here? No, sir. No. There is no sale return or purchase return happening. There are certain circumstances which happened because of which the price of the phone either 5,000 से कम हो गया, 15,000 से बढ़ गया, whatever that scenario is, phone का price change हो गया. Now I want to pass on that rate change to the customer. I can do that with the help of a debit note or a credit note. Let's create one example जिससे आपको और better समझेगा. सेम एंट्री करते हैं. ठीक है, समकित इज स्माइलिंग, तो आई विल यूज हिज नेम. सोल्ड गुड्स टू समकित फॉर 1 लाख. और ये 1 लाख कैसा था ना, 100 यूनिट्स ऑफ प्राइस 1,000 ईच. तो समकित एंट्री क्या करो इसकी? Samkit to sales. Samkit account debit to sales. Very good. Samkit account debit to sales account. कितना? 1 लाख. यहाँ तक समझो अपना रेगुलर एंट्री है. For some reason, the price has now been revised as per government norms. Now, the same material is for 1,010 rupees. Material वही है. He is not returning me anything. I am not selling him something extra. But now the price per unit has changed. और अब मुझे उनसे now should I charge him another bill? पहले मैंने क्या किया था, 1,000 into 100 किया था. अब मुझे क्या बोल रहा है, 100 into 1010. नाउ मैं नया सेल बिल इशू करूं या सिर्फ 1,000 रुपए के डिफरेंस के लिए उनको एक डॉक्यूमेंट दे दूं? क्या करूं मैं? 1,000 रुपए के लिए एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा जी. 1,000 रुपए के लिए एक डॉक्यूमेंट देना मेक्स मोर सेंस ना. अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट कैंसिल करो, ये एंट्री को उड़ाओ, फिर नई एंट्री रिकॉर्ड करो, तो कितना टाइम चला जाएगा, कितना एफर्ट चला जाएगा. अभी तो आपने जीएसटी देखा नहीं है, बट जीएसटी फ्रंट पे भी या टैक्स फ्रंट पे भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे. उससे अच्छा है ये जो डिफरेंस है ना 1,000, वी कैन सॉर्ट इट आउट ना. पहले मुझे समकित से 1 लाख रुपीस रिकवर करना था, अब मुझे उनसे कितना रुपीस रिकवर करना है, 1,01,000. पहले मैंने समकित को कितने से डेबिट किया था? 1 लाख. कितने से करना चाहिए टोटल? 1,10,000. 1,01,000. So additional debit to Samkit should be for what amount? 1,000. 1,000. Very good. So 1,000. And you write here. What do you write here? Debit note. I will issue a debit note to Samkit saying that now his account is
debited in my books for additional 1000. So debit note and credit note, it's not necessary that you will use it only for sale return, purchase return. You can also use it to pass on the rate change. ये समझा? देख लो एक बार अच्छे से. There's no hurry. Take 2 minutes to go through this. Sir, I have a doubt. Yes, tell me. सर यहाँ पे अमाउंट छोटा है. इफ अमाउंट बड़ा होगा तो लाइक इफ 1,50,000 देन तो भी like whatever the amount is the same process. correct, because see, technically there the sale of goods has happened. This is not a transaction for sale. इससे सिर्फ मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ. गुड्स का मूवमेंट तो पहले ही हो चुका है ना. Yeah. You are only Yeah, passing the rate difference. See, I how got to it. define the concept of sale is very interesting. For goods, when do we say that sale is complete? When significant risk and reward of ownership has been transferred to the buyer. संकित को जब मैंने मटेरियल हैंडओवर किया मेरे गेट पे and he took it, all the risk and reward of ownership had been transferred to संकित ना. So sale is complete. I am only giving him the benefit of any rate reduction or taking the additional rate increase from him. So उस केस में हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट यूज कर सकते हैं. और सर अगर प्राइस कम हुआ तो भी तो क्रेडिट नोट आएगा. या दैट ओनली. ठीक है, प्राइस कम हुआ, समझो यहाँ पे अपना 1000 था. व्हाट इफ दिस वाज टू बिकम 98,000? या तो 1000 माइनस 98, 2000 अब संकित से कम रिकवर करना है ना मुझे. यस सर. तो in that case what will happen is you will have to debit. See, usually ना सेल्स अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं होता है. या कभी सेल्स अकाउंट डेबिट होता दिखे तो you have to ask yourself a lot of questions. Why is this happening? Ideally it should not happen. हो रहा है तो this could be one reason. Rate change record हो रहा है. So, हाँ? so instead of sales, can we use sales return, because you know we cannot. Sales return, there's actually goods are returned to you, right? Okay. Now, if goods are not returned to you, you cannot call movement of goods. कहाँ हो रहा है यहाँ पे? Movement of goods होगा तभी तो वो sales return या purchase return उसको हम बोल पाएंगे ना. That is not happening here. And okay, I have one more question. It's a bit silly doubt. Like obviously, in this case, we are paying Sanket 2,000 rupees, right? So, why can't we use cash account? We are instead of not sales? paying Sanket 2,000 rupees. See, we had said 1 lakh was receivable from him. Yeah. Now I'm reducing that receivable by 2,000. So tomorrow when he Okay. pays me the dues, he won't pay me 1 lakh. He'll pay me only 98,000. Okay. All right, I got it. Thank you so much. Most welcome. And no doubt is silly. That concept is not there. Every doubt is a legit doubt. ठीक है? Sir, even I had a doubt. Yeah, बोलो Sir, बोलो. in this particular instance, the changeable rate is due to the government norms. But let's just say, like the earlier example which you gave yesterday for iPhones. So Apple constantly varies the prices of the phones. So if the phone prices drop and you have sold to Samkit on credit an iPhone, so will it still hold for that? Apple changes the prices, I agree, but it does not pass on that price change to you. I am talking, see, ये कब होता है ना? This is more for, not so much for sophisticated goods. This is for food grains, all those items, you know, where purchase and sale happens in bulk. Now, Joshin has asked a question, what happens when there's a tax component involved? We'll look at it later. सब complication अभी नहीं लाते हैं, एक एक करके लाएंगे. But debit note and credit note का concept समझा है सबको? Hinal? Megha? Yes, sir. There are only 2-3 things in life where I
because of which मैं interviewees को reject करता हूँ. One is not knowing what is a debit note, credit note. इंटरव्यू में बोलते हैं अरे एक बार तो आई हैड गॉन फॉर एन ऑडिट, तो अब डेबिट नोट का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिखा रहता है DEBIT NOTE एंड देन वी यूज इट, वी चेक इट. तो वहां पे ना एक फाइल में क्रेडिट नोट लगा हुआ था, तो हमने पूछा अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है क्रेडिट नोट, इसको उसके फाइल में लगाओ ना. तो इज लाइक सर वो हमने जो प्रिंट करके डेबिट नोट बनाए थे ना वो खत्म हो गए, नए प्रिंट करने का पैसा नहीं था और टाइम नहीं था, तो हमने क्रेडिट नोट बुक यूज कर लिया. ऐसे नहीं करना है. हाँ, रियल लाइफ में ऐसा सेंसर वर्ड पागलपन हमें नहीं करना है. डेबिट नोट की जगह डेबिट नोट ही इशू करो, क्रेडिट नोट की जगह क्रेडिट नोट ही इशू करो. ऐसे तुम समझ लो, तुमको पता चल जाएगा, ऐसा पागलपन हमें नहीं करना है. हाँ, अगर मनी इंक्रीज होता है तो फिर डेबिट नोट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट नोट. हाँ, नो. तो if your account is debited in my books, I will issue a debit note. okay. That is the only logic, Abha. Increase, decrease is something we have to stop using in accounting. Okay. Everything will be debit, credit. मतलब if your account is debited in my account and then अगर money बढ़ता है किसी भी चीज का, then I will issue you a debit note. Repeat that line once again. Create a transaction and talk. Do not say money ऊपर नीचे. We will not be using those terms. Okay. If say your account create a transaction, you have sold something to me. Yeah. What entry will you record? I have sold you a goods like okay. So Satyamade account debit to sales account. Very good. And I'm returning some material. कुछ material मैं वापस कर रहा हूँ. Yeah. तो sales return account debit to Satyamade. So yes, what is happening to Satyamade's account in your books of accounts? First he was debited and now he is credited. Now he is getting credited, right? Which is transaction. So in your book, Satyamade's account is getting credited. What will you issue him? I will issue him a credit note. Very good. Okay, I got that. Yeah. Got it. So there's no such thing as increase, decrease. Yeah. ठीक है? Thank you, sir. Hello, sir. Hi. Your friend is in Dehradun, ना? Yes, sir. मजा है उनके तो. Enjoy कर रहा हो. हाँ. आप कहाँ थे कल? Sir, कल मिस हो गई क्लास. अरे it's okay, no problem. बाद में देख लेना कल. Don't worry. मैं खड़ूस नहीं हूँ. ठीक है. सिर्फ दिखता हूँ according to some people. अरे no, sir. अरे I am joking, Baba. I am joking. It's only when I am comfortable that I get to joke. FM में मेरे को डर लगता है joke करने से. बच्चे डांट देंगे मुझे. क्यों सर पढ़ाओ. Joke मत करो ऐसा. Okay. Guys, when we end your class, remind me to tell you something funny. And Pratham will not smile right now. Pratham as in Shetty. Every batch has one Pratham, by the way. So debit note. Debit note, credit note, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Now, let's move on to the next concept, that is discount. What is a discount? Can someone tell me? Reduction in the price value. Reduction in the price of any commodity is a discount. Now, if I offer a discount, that is one thing, and if I receive a discount, that is the opposite thing. Yes. Discount देना and किसी से discount मिलना are opposing items. Yes, sir. To understand. Now, there are within discounts also there are two things or two kinds of discounts that you need to understand. First one is the trade discount. Ever heard this term, trade discount? Yes, sir.
Yes, sir. हाँ. What is a trade discount? Sir, a discount. Discount on market price. Okay. Discount Anyone on else? volume of the sales. The So any discount which is given in order to increase sales volume is a trade discount. So sometimes when you do shopping, street shopping, and you're like buying clothes for yourself, 2 t-shirt 400, but sir आपने 4 लिया, so 2 t-shirts are for 400, so technically 4 should be for 800, right? But वो बंदा आपको क्या बोलता है, सर आप 4 ले लो, 720 में डन करता हूँ. फिर आप उसके साथ भैया ठीक से लगा, हमेशा आपके पास आते हैं ऐसे बोल के 700 में सेटल करते हो. What is this 100 rupees reduction? Why is he willing to take that 100 rupees hit? Because he knows that he is now able to sell you 4 units of the same commodity. So this trade discount is usually offered at the time of entering into the contract of sale. If I buy in bulk from you, if you buy in bulk from me, for example, I will reduce the price per unit to a certain extent to make it more attractive to my customers, and that discount is known as trade discount. Any discount which is given to increase the trade, to increase the sale, is a trade discount. Volume based discount hota hai given by the supplier. If I were to put it simply, volume based discount offered by supplier done to increase sales volume, and trade discount is So I had a question. yes. So that means this trade discount must be used a lot by the wholesalers or like Amazon or Flipkart. So this is agreed to before, at the time of entering into the contract of sale, this discount is agreed upon. Ki aap, sometimes, you have this thing on Amazon, buy 1, 2 and 3 together and get 100 off. या स्विगी में होता है ना कि add 250 more to your cart and get some whatever 50 rupees off, ऐसा कुछ स्कीम होता है. So why is that done? आप एक ही कुछ बिरयानी परचेज करोगे तो आपको फुल प्राइस रहेगा. They say add a dessert, add some other side dish. So रेस्टोरेंट के एंगल से 3 चीजों का सेल हो रहा है, उनका प्रॉफिट मार्जिन एकदम तगड़ा है, डोंट वरी अबाउट दैट. They are making their own profit. What they are trying to do is they are trying to increase the sales quantity. आपको थोड़ा सा डैश बना के, उल्लू बना के, आपको उल्लू बना के आपसे थोड़ा सा प्राइस रिडक्शन देके they are increasing the sales volume. The number of times I have ordered stuff on Amazon or any of these sites because of that one discount number, उसमें एक एक्टिवा खरीद लेता मैं पिछले 4 साल का. अगर डिस्काउंट चक्कर में जो खरीदारी की है ना, उस पैसे में एक एक्टिवा खरीद लेता कैश में. इतना मेरा फालतू का शॉपिंग हुआ है. So that is a trade discount. This is not recorded in books of accounts. So this example that we were, yeah. Sir, as you said, it is not recorded in books of accounts. So the bill would be made of original price only, no? बिल ओरिजिनल प्राइस का ही रहेगा ना? बिल ओरिजिनल प्राइस का नहीं रहेगा. बिल आपका रहेगा, से आई एम सेलिंग दिस टू अ हर्ष, मेरा अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगा हर्ष अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट. ओपन योर स्विगी राइट नाउ और किसी भी आइटम के नीचे ऐसे लिखा रहता है 20, उसको स्लैश, उसको स्क्रैच करते हैं, वो स्ट्राइक थ्रू इट, नीचे दे राइट 180. आपके बिल में 200 नहीं आता है, 180 आता है.
कभी कभी 200 आता होगा, बट स्विगी का मतलब algorithm works in a different way. In real life, whenever you offer a trade discount, वो अमाउंट माइनस करके आप सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड करोगे. अरे बाप रे. थोड़ा समझा what is a trade discount. Just be sure or this fact in your head that trade discount is never recorded in books of accounts. So Huh? the goods and products which are sold in the mall, when they keep a sale or a discount, is it the same of trade discount happening? That could be a stock clearance sale जैसे आप बोल रहे हो वो Yeah, ना. yes. हाँ, that is a trade discount. That is a trade discount. क्या होता है ना? They have already written off these goods. They are stock clearance sale. मतलब क्या? Before the new fashion comes in, they want to sell everything that is lying in their godown. So anyway, they don't expect too much from it. They have written the inventory down. They are simply selling it to you at a slightly lower price. तो जो उसका billing होगा ना, वो फाइनल रिड्यूस्ड अमाउंट पे होगा. ऐसे 800 माइनस 100 ऐसा नहीं होगा. नेट 700 पे ही उसका बिलिंग होगा आपका. So even during the stock clearance discount, they are in the benefit or we get a benefit? बेनिफिट हमेशा उनका ही रहता है. आई टेल यू व्हाई. वो क्या होता है ना, 50 रुपए जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको वो 5000 में यूजुअली बेचते हैं. एंड देन इफ दे टेल यू 5000 की चीज 4000 में, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, वो प्रॉफिट में ही है. आपको लगता है अरे वाह, नाचते नाचते घर आते हो, फ्रेंड के लिए भी लेकर आते हो, उसमें भी हो ना 3 खरीदा तो 12,000 नहीं 10,000 में मिलेगा. अरे सब पागल बनाने की स्कीम्स है और कुछ नहीं है वो. So या I had a question. जैसे आपने अभी स्कीम्स बताई 4,000, 6,000 और 10,000 की. अब जैसे मेरी कंपनी है और मुझे भी ऐसे ही डिस्काउंट्स ऑफर करने हैं, तो ये सब कराने के लिए मैं अपने अकाउंटेंट के पास जाता हूँ कि वो मुझे गाइड करता है कि ऐसे ऐसे आप स्कीम्स लेके आओ, या फिर ये मैं खुद ही करता हूँ, या फिर इसके लिए कोई स्पेशली बंदा हायर करता हूँ? एक नॉर्मल अकाउंटेंट के बस की बात नहीं है बिजनेस ओनर को बताना कि उन्होंने डिस्काउंट्स कैसे ऑफर करना है. मोस्ट ऑफ इट विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट सीन, कि मार्केट में क्या प्रिवेलेंट रेट्स है एंड ऑल ऑफ दैट. वो एक पहली चीज हो जाती है. द सेकेंड पार्ट इज यू हैव MBA मार्केटिंग वाले लोग क्यों रहते हैं ना, यही सब काम करने के लिए तो उन्हें पैदा किया गया है. 50-50 लाख सैलरी लेते हैं ना, वो ये नंबर बताने के लिए लेते हैं वो लोग. तो यू हैव अ टीम. सी एंड मैं ऐसे बोलने में बोल दूंगा अरे 800 का 700 करो, बट फॉर अ बिग कंपनी you have MBA marketing people who spend so much time deciding what should be the discount that you are offering people. ऐसा ठीक है. Now this is a trade discount and there is a second form of discount known as a settlement discount slash early settlement discount slash early payment discount. So it's also called cash discount, right? Yes, it is also called as cash discount. Have you guys received the communication about your notes? Okay. You have access to notes, right? मतलब LMS पे एक्ट है नोट्स का. Yes, sir. बच्चों don't make me say बच्चों, है ना access? Okay. Any problem with the notes, guys? Tell me. I'll get in touch with the content team and get it delivered to you. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि you need something and you have not told me. Whatever it is, अभी बता दो, arrange करा देंगे आपके लिए. ठीक है? So can you please tell कहाँ पे है notes? I'm getting a little confused. डाउनलोड कैसे करना है?
हाँ, डाउनलोड फीचर अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है. आई थिंक व्हाट दे आर प्लानिंग इज दे आर प्लानिंग टू ईदर एक्टिवेट द डाउनलोड फीचर और सेंड हार्ड कॉपीज टू यू. बिलीव मी गाइस, आपसे तकलीफ मुझे हो रहा है बिना आपको, विदाउट यू हैविंग एक्सेस टू नोट्स. टीचिंग यू इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर मी, बट वी आर ट्राइंग टू वर्क अराउंड. इसीलिए मैं आई एम टेकिंग दोस टॉपिक्स वेयर आई डोंट नीड द टेक्स्ट. आपका क्लास इज स्टिल फाइन. The notes which you showed yesterday, you're talking about that, right? Yes, I'm talking about those, but Yeah, so my given, examples I'm trying to cover more. Notes में थोड़ा अगर depending on how you are responding. yeah, so but Yes. I think I'm able to download it. Like I can open the note. एक बार आप सबको Yes, बता I देना have. आज. Yeah, so sure. हाँ, सबको एक बार आप बता देना. मुझे भी बता देना. I am technologically not the smartest person around, so I might Yeah, need so help. same. ना बता देना. Okay. Now, अरे आपका class is still fine. My FM class yesterday was a train wreck. Horrible train wreck. Because वहाँ पे I don't have so much time to play around. I have to straight away get into the syllabus. मेरा दिमाग खराब हो गया था. मेरे को इतना टेंशन आ गया था by the end of the class कि बच्चे पत्थर फेंक के मारेंगे आज मुझे, because they don't have the notes. But ठीक है. I wish I had that coffee. I really wish I had that coffee right now. I have no milk in the house अभी, तो लंबा process है. So you know, in my last F3 batch, like not everyone knew everyone's name. So if I say, "Arey Hussein clear." अच्छा, the one who used to drink tea, yeah, that one. अच्छा, Karan cleared. अच्छा, so जिसका यहाँ से ऊपर का चेहरा दिखता था वो, ऐसा people remembered each other and not by their names. Okay. So what is an early settlement discount or an cash discount? What do these terms mean? What this means is, I have provided services to Yajur for all the 13 papers of ACCA. कुछ 1.5 लाख रुपए के services मैंने Yajur को दे दिए हैं. I have recorded an entry Yajur account debit to tuition fees income. कितना? 1,50,000. अब भैया पैसे आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, ऐसा चल रहा है, दे ही नहीं रहे हैं. मैंने बोला भाई तो 1,40 में करा दे. तो बोलता है हाँ चलो 1,40 में दे दूंगा, फिर केस क्लोज. उसके बाद मेरे पास कुड़कुड़ करते हुए नहीं आना. आई सेड फाइन, तू पैसे दे मुझे, 10,000 माफ. This 10,000 that I am giving him, that leeway is my cash discount. Sometimes it might happen that Yajur says, I'll pay you 1,50,000 but after 6 months. I said, how much can you pay me today? I said 135. हाँ दे दे, 15,000 माफ, 1.5 लाख दे दे, 10% डिस्काउंट. तू भी क्या याद रखेगा, मेरे पास तो बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे का, मुझे चाहिए. 135 दे, तुम भी खुश, हम भी खुश. That is an early settlement discount. Sometimes in order to ensure that you don't end up in a situation of bad debts, जितना दे रहे हो दो बट दो. Like I tell to my students, जितने chapters हो रहे हैं करो बट करो. Don't sit idle, finish it. However, whatever amount of cash you can pay me, pay that to me right now. That is an early settlement discount or a cash discount, where the discount is not decided at the time of entering into the transaction, but later on, because I want an early collection of cash. I want an early collection of cash, or I don't want the risk of bad debts. I say I'll reduce the price by 2, 3, 4, 5%. You pay me the amount today. You pay me the amount, your case is closed. That is an early settlement discount or a cash discount. इन दोनों में फर्क क्या है? Trade discount जो है at the time of entering a transaction is decided. Cash discount या early settlement discount बाद में आता है पिक्चर में. जल्दी वसूली करनी है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया. That is cash discount. Trade discount is not recorded in books. Cash discount is recorded in books. ठीक है? सर हाँ बोलो.
Sir, so in the PL account only cash is recorded, right? In the PL account only cash discount recorded, right? Yes, Sir, in only the cash PL discount account. is recorded. Okay. Because trade discount का accounting entry ही नहीं होगा तो वो P&L में कैसे जाएगा? Okay. Correct. So let's take this example. ये तो 700 वाला है. So what I will do here is 100 is trade discount. Not recorded anywhere in books. Let's take this case. Sold goods to Yajur for 1,50,000 to ensure speedy collection of cash. I asked him to pay 1,45,000. I offered him a discount of 5,000. तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल एंट्री होगा 1,50,000, and now I am reducing the amount that I am collecting from him. I give him a discount of 5,000. ये कैसे होगा? Discount allowed account debit. See, debit all expenses and losses. Discount is a loss for me. मेरे लिए loss है, इसीलिए आई एम डेबिटिंग डिस्काउंट. एंड अब यजूर से उतना पैसा कम कलेक्ट करना है ना मुझे. पहले 1,50,000 से डेबिट किया था यजूर अकाउंट. ठीक है, और ये भैया फिर हमें कैश दे देंगे. बाद में उनसे कैश कलेक्ट करेंगे. सिंपल सा ट्रांजैक्शन है. अब गाइस टेल मी समथिंग, लेट्स डू दिस अकाउंटिंग. ये किसके बुक्स में है? ये मेरे बुक्स में है. अगर आपको याद है, इन 11th and 12th यू यूज्ड टू राइट इन द बुक्स ऑफ आशुतोष जर्नल एंट्री, और फिर करते थे ना. तो हियर आई विल राइट बुक्स ऑफ सत्यमेत. Let me write books of Yajur. मैंने सेल किया तो भाई साहब क्या करेंगे? Purchase from Satyamet करेंगे, right? Yajur, tell me what will be the accounting entry? Purchase to Satyamet. Very good. Purchase from Satyamet. Now, discount of 5,000 was offered by supplier. Supplier ने इनको discount दिया. For Yajur, this 5,000 discount, that is a gain for him, right? That is an income for him. उनको पहले मुझे 1,50,000 पे करना था, बट अभी 1,50,000 पे नहीं करना है, 5,000 कम पे करना है. Any reduction in future liabilities also gain ही हो गया ना मेरे लिए. So my accounting entry will be credit all incomes and gains. To discount received account.
यहाँ पे क्या डालूं मैं? सत्यमेव को पहले 150 पे करना था, अब मैंने बोला भाड़ में जा, 150 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 5000 कम। And ultimately when he makes payment to Satyamev, to cash. ठीक है? समझा how discounts operate? Yes, sir. Sir. Yes, sir.